भूल जाएंगे। जोशी जी का former RNW chief to ensure that the Chinese are not keeping surveillance on Zoom platform. Namaskar to all. अमिताभ जी, गुड इवनिंग। प्रोफेसर दर बोल रहा हूँ। Namaskar, Maharaj. We were with the Sapna's college principal also, Savita Roy ji. Vibaji is also with Chauhan साहब। आपके हमारे वाइस चांसलर महोदय कहाँ हैं? आने वाले साहब नमस्कार, अशोक ओगरा। Oh, good, good. I can't see you, but I can see Razdan. Nancy ji, you may put everyone on mute and begin the program. Then we can have a more friendly, informal discussion after the formal proceedings. So we started. Good evening, ladies and gentlemen. I warmly welcome you all on behalf of Stratfest India to this musical evening, Hum Honge Kamyab, in solidarity with students impacted by COVID-19. We are very grateful to our chief guests this evening, Professor Veer Singh Chauhan, a Rhodes Scholar and Chairman Executive Committee NAC, Professor Yogesh Tyagi, Vice Chancellor Delhi University, Professor Amitabh Mattu, a renowned international thinker and writer, and also chief mentor for Stratfest India. Stratfest is an organization set up by a group of visionary advisors and mentors that include some of the most respected names from education industry and public policy. Stratfest was created to craft and implement a global strategy for a new India across the frontier of the entire knowledge spectrum. COVID-19, above all, as we all know, is a human crisis that calls for solidarity. Students, who are the future of our society, are the ones who have been worst impacted by this pandemic. But on the other hand, they have also been on the front line of the war against Corona. Stratfest stands united with all of them and will support them. But as an expression of solidarity, will not announce any financials today because we don't want to reduce this forum of music and art to mere numbers. Today, we have with us Dr. Sapna Kachru Ni Rainam. She is one of the standalone contemporary India's most talented Hindustani classical vocal musician of the Delhi Gharana. Her virtuosity combines a understanding of Khayal, the highest tradition in Indian classical music, with folk and popular song. Dr. Sapna Kachru has performed extensively in India and abroad, and Stratfest is hopeful of organizing a musical concert in 2021 in Royal Albert Hall in London and NCPA Mumbai. May I please request our chief guest for the evening, Professor V.S. Chauhan, a Rhodes Scholar, and also he has been writing extensively these days on this pandemic, to speak a few words, sir. ये अनयूजुअल सिचुएशन है, नहीं तो अच्छे गाना सुनने में और ऑडियंस के बीच में कोई ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए किसी को। मैं हमेशा इसमें विश्वास रखता हूँ, मगर ये चूँकि आप ये प्रोग्राम स्टूडेंट के साथ सॉलिडारिटी दिखाने और उस मुश्किल के समय में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो मैं चूँकि मैं साइंटिस्ट भी हूँ, तो मैं स्टूडेंट्स को बस यही कहना चाहूँगा, स्टूडेंट्स क्या, सबको, अपने आप को, आप सबको यही कहना चाहूँगा कि ये कोई पहली बार नहीं कि इस तरह का वायरस या इस तरह की बीमारी मैनकाइंड ने फेस की हो। ये बहुत रेगुलरली 5000 साल से ये इस तरह के प्रकोप होते रहे हैं, और आदमी हमेशा मैंने अपने पहले आर्टिकल में लिखा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि आखिर में ये कोरोना का हारना और आदमी का जीतने की बात नहीं है। ये नेचुरल एवोल्यूशन का प्रोग्रेशन है कि ये आएंगे और ये जाएंगे और फिर से आएंगे और फिर से जाएंगे। मगर अभी
चूंकि हम इस मुश्किल में फंसे हैं, तो मैं और जितना भी हम साइंस के बारे में इसके समझ सके, मैं ये दो चीज़ कहना चाहूँगा। एक, मैंने अपने करियर में और रिसेंट हिस्ट्री में इतनी बड़े स्तर पे साइंटिफिक कोलैबोरेशन इंटरनेशनली हमने कभी ना देखी, ना हिस्ट्री ऑफ साइंस में आपको मिलेगी। अब हो सकता है टेक्नोलॉजी के कारण ये ज़्यादा पॉसिबल है, मगर कोई भी ऐसा देश नहीं है या ऐसी साइंटिस्ट नहीं है जो एक दूसरे से शेयर नहीं कर रहे हैं जो भी किया जा सकता है। तो थेरेपी के लिए अलग से बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, इसके क्योर के लिए। और चूंकि अभी कोई वैक्सीन नहीं है, और चूंकि वैक्सीन में मेरा अपना भी इंटरेस्ट है, तो इतनी ज़्यादा कोशिश जो इंटरनेशनली हो रही है, तो ये समय नहीं है कोरोना के बारे में बोलने के लिए। पर मैं सबको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर इसकी वैक्सीन बन सकती है, तो समय से पहले इतनी तेज कभी कोई वैक्सीन नहीं बनी होगी, तो इसमें बड़ी अच्छी उम्मीद की जा सकती है। मगर जब तक वैक्सीन या स्टैंडर्ड क्योर नहीं हो, अब सबको मालूम है कि मैं ये कहना चाहूँगा, कोरोना वायरस और ऐसे वायरस से अभी और ऐसी बीमारियों से भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भय है और जो स्केयर है, वो अपने दिमाग से हमको निकालना होगा, बल्कि बस सावधानी की बहुत ज़रूरत है। और सावधानी कैसे की जाए, अब सबको मालूम है। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि जी MHRD मिनिस्ट्री, UGC, कॉलेजेस, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर्स सब इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि किसी तरह से जो करंट बैच है उसका नुकसान ना हो। हमें मालूम है, हम सब लोग खुद भी एप्रीहेंसिव है, स्टूडेंट्स भी एप्रीहेंसिव है, मगर इस सिचुएशन को ऐसे ही डील किया जाएगा जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। थर्ड ईयर के एग्ज़ाम होंगे, स्कूल खोले जाएंगे, कॉलेजेस इनेविटेबली खोले जाएंगे। अभी सोचे तो ऐसे देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है कि कैसे होगा, पर मैं आपको सबको ये कहना चाहता हूँ, निश्चिंत रहिएगा, ये ऐसी नहीं है कि मैनकाइंड ने पहले ऐसी कोई चीज़ ना देखी हो। और हमेशा ही ये जो ह्यूमन स्पिरिट है, ह्यूमन इनोवेशन है, वो ही आगे निकलती है। आप देखते रहिएगा, हम लोगों के सामने ये होगा। तब तक, जब तक कि वैक्सीन नहीं बने या इलाज नहीं निकले, बिल्कुल सावधानी बरतनी। और सावधानी कैसे बरतनी है, ये सबको अब मालूम है, और होशियार रहना है, मगर इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की जो सिंगर है सपना जी, मैं इनको कुछ पिछले सालों से फॉलो कर रहा हूँ। इतनी अच्छी मधुर और साफ आवाज़ में गाती हैं, और क्या गाएंगी ये तो वही उन्होंने डिसाइड किया होगा। बट मैंने इनका राग देश और राग सोहनी थोड़े कुछ दिनों पहले सुना था। वो अभी भी कभी मैं सोचता हूँ सोहनी के बारे में, तो सपना जी की आवाज़ मुझे याद आती है। तो बस मैं इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं कहूँगा। इनफॉर्मल चैट जब करेंगे। अब सपना जी का गाना सुनने के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। Thank you so much, sir. Thank you for such lovely words. Professor Yogesh Tyagi was supposed to join us, but is late by few minutes. So may I please request Professor Amita Mattuji to speak a few words. Thank you. बहुत धन्यवाद नैन्सी जी। और मैं सबसे पहले तो अपने सारे जो मेहमान यहाँ उपस्थित हैं उनका वेलकम करता हूँ। सबसे ज़्यादा प्रोफेसर वीर सिंह चौहान साहब का, जिन्होंने स्ट्रैटफर्स्ट को एक मार्गदर्शन दिया है। और इस दौरान जो हमारे क्वारंटीन और लॉकडाउन के दौरान भी मैंने इनसे बहुत एडवाइस ली और बातचीत की। आश्चर्य की ये बात है कि स्ट्रैटफर्स्ट का इससे पहले प्रोग्राम एक था जिसमें हमने प्रोफेसर गगनदीप कांग, जो पहली औरत हैं यहाँ, साइंटिस्ट हैं, फीमेल साइंटिस्ट है जो भारत की, जिन्हें FRS मिला है, वो भी इम्यूनोलॉजी के फील्ड में काम कर रही हैं। और वीर सिंह चौहान साहब ने ही उनको अवार्ड स्ट्रैटफर्स्ट की तरफ से दिया। और आज हम ये पैंडेमिक फेस कर रहे हैं, और भारत में शायद वीर सिंह चौहान और गगनदीप कांग से ज़्यादा इस फील्ड में और कोई जानकारी नहीं रखते, इतनी ज़्यादा जानकारी है इनमें। और जब ये एक तौर पे तो कहते हैं कि प्रिकॉशन, कॉशन, लेकिन साथ साथ में भी कहते हैं कि इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है।
इन्होंने तो मुझे आज शाम को ही निवेदन का एक इनविटेशन कहा कि आओ बैठ के कभी बात करेंगे और हमारा दरवाजा खुला है, ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो एक कॉन्फिडेंस भी दी और उसी कॉन्फिडेंस की वजह से हमने ये एक म्यूजिक का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। ये एक म्यूजिक का प्रोग्राम है इन सॉलिडारिटी, जैसे नैन्सी जी ने बताया, इन सॉलिडारिटी जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, एक कई तो स्टूडेंट्स ये हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जिनकी अभी डिग्रीज कंप्लीट नहीं हुई लेकिन वो आगे हैं एज वॉलंटियर्स, एज एक्टिविस्ट, एज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जो लड़ाई, एक जंग लड़ रहे हैं वायरस के खिलाफ। दूसरे वो हैं जिनकी एजुकेशन एक अनसर्टनिटी के माहौल में रुक गई है, एक पॉज हो गई है। तो उन सब स्टूडेंट्स, जितने छात्र हैं, और हमारे प्रमोद कुमार जी भी हैं यहाँ, रजिस्ट्रार JNU के, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के ऐमा साहब भी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारे सीनियर और एक बड़े फॉर्मिडेबल इंटेलेक्चुअल राजकुमार भाटिया जी भी यहाँ बैठे हुए हैं। उन सब को पता है कि इस वक्त हमें जो छात्रों के साथ एक सॉलिडारिटी दिखानी है वो सबसे जरूरी है। और हम सब एकेडमिक कम्युनिटी के लोग हैं, स्ट्रैट फर्स्ट में भी हम जुड़े हुए हैं कॉलेजों के साथ। राजीव जी हैं यहाँ, चेयरमैन हैं कॉलेज के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो सब हम किसी तरह से जुड़े हुए हैं कॉलेजों के साथ और यूनिवर्सिटीज के साथ। और हमारी ये कोशिश है कि एक पैगाम हो, एक मैसेज आए यहाँ से। जैसे नैन्सी जी ने कहा, हम ये डोनेशन कलेक्शन का मौका नहीं है, वो हम कर रहे हैं, वो हम जो करेंगे वो हम करेंगे अपनी लेवल पे, लेकिन इस वक्त एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं और हम होंगे कामयाब, वी शैल ओवरकम। और यही संदेश हम आपके माध्यम से और सबसे ज्यादा सपना काचू जी के माध्यम से, उनके संगीत के माध्यम से दुनिया को देना चाहते हैं। भारत के हर एक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ना चाहते हैं हमारे छात्रों को और अध्यापकों को। और सपना जी जो है, चौहान साहब ने बताया इनके बारे में। सच बात तो यह है कि सपना जी को मैंने एक बार ही सुना एक क्लासिकल म्यूजिक के प्रोग्राम में, और सचमुच उनका जो पकड़ है संगीत पे और ख्याल पे, वो एक जो भारतीय परंपरा है उसमें एक यूनिक ट्रेडिशन है दिल्ली घराना का, उसको रिप्रेजेंट करती है और रिप्रेजेंट द हाईएस्ट पिनिकल को करती है उस दिल्ली घराना का। इनकी पहली तो तालीम जो संगीत के माध्यम से हुई वो गंधर्व महाविद्यालय में हुई, बनारस घराना में हुई। लेकिन ये सचमुच जो इन्होंने सीखा और जिसको रिप्रेजेंट करती हैं वो दिल्ली घराना और उनके खलीफा जिन्हें कहते हैं हम, एक उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब, उस खलीफा से इन्होंने तालीम ली और आज इनका नाम देश विदेश में बहुत मशहूर है। अगले साल ये रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म कर रही हैं। NCAPA में एक और चैरिटेबल कॉन्सर्ट है मुंबई में, जब मुंबई की हालत ठीक हो जाएगी वहां भी परफॉर्म कर रही हैं। और ये हमारा एक ऑनर है, हमें ये गर्व है कि ये एल्बर्ट हॉल और कैनेडी सेंटर में जब परफॉर्म करेंगी, स्टैट फर्स्ट के माध्यम से ही परफॉर्म करेंगी। आज की शाम इन्होंने क्योंकि हमने कहा कि डाइवर्स ऑडियंस है, एक कई जो हैं शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए हैं, कई फोक म्यूजिक के साथ जुड़े हुए हैं, कई भजन इस वक्त सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने जो आज इनका जो प्रोग्राम होगा, शुरू होगा, जैसे हम सब कश्मीरी पंडित हैं, एक खास बात तो ये है कि सपना जी भी कश्मीरी पंडित है, मैं भी कश्मीरी पंडित हूँ, और कई ऐसे लोग हैं यहाँ जो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम के साथ, वो भी कश्मीरी पंडित। और हमारे लिए ललदैद और ललवाक बहुत महत्व रखता है, और ललवाक से शुरू करेंगी और उसके बाद फयाज हाशमी की एक गजल जो फरीदा खानम ने जम्मू में भी गाई थी, लाहौर में तो गाई थी, आज जाने की जिद ना करो। उसके बाद एक फंडामेंटल जो राग है, और चौहान साहब तो ये इस पे बहुत ध्यान दे सकते हैं कि जो सबसे फंडामेंटल राग हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का है, यमन,
बट वो एक इजीली एक्सेसिबल राग भी है। तो यमन की एक बंदिश सुनाएंगी, फिर भजन और कुछ फिर पॉपुलर बॉलीवुड संगीत। तो ये इनका पूरा रेpertoire होगा आज। ये हमारी खुशकिस्मती है कि इन्होंने माना, और जूम के माध्यम से, क्योंकि जूम के माध्यम से शास्त्रीय संगीत को कितना भी कुछ आप कहें उतनी जस्टिस नहीं कर सकेंगी, तानपुरा नहीं, संगत नहीं, लेकिन जितना वर्चुअल मीडियम के से हम कर सकते हैं वो कोशिश है आपके सामने आज ये पेश है। लेकिन सबसे ज्यादा तो हम ये एक, मैंने जैसे आपको कहा, एक मैसेज देना चाहते हैं। और योगेश त्यागी जी ने मुझे अभी व्हाट्सएप करके बोला कि वो देर से आएंगे, लेकिन वो भी एक पैगाम देना चाहते हैं कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति के की तरफ से ये सारे स्टूडेंट्स को आश्वासन देना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी आपके लिए है, और ये देश की सारी यूनिवर्सिटीज जो है स्टूडेंट्स के लिए है। और जब तक स्टूडेंट्स का हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की करियर, उनके एग्जामिनेशन, उनके शेड्यूल पे, एकेडमिक शेड्यूल पे इतनी हर्डल्स आई हैं, आगे हम टेक्नोलॉजी के जरिए या बाकी माध्यमों के जरिए ये दूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर दोहराऊंगा, आप मेरे साथ दोहराइए। आपके म्यूट हैं लेकिन आप साइलेंटली अपने तरफ दोहराइए, हम होंगे कामयाब, वी शैल ओवरकम। सपना काचरू जी। Indeed, sir, we shall overcome this pandemic. I would also like to welcome Mr. Alok Joshi, ex-director Raw Celebrating Officer, and Dr. Shankar Adawal, renowned astrologer and President Reliance Industries. Over to you, Sapna ji. We are waiting for this moment. I'll not take much of your time now. Thank you so much. हकीकत ये है कि आजकल घर की झाड़ू पोंछे से फुर्सत ही नहीं है कि मैं जितना कर पाती जितना करती थी, पर क्योंकि मौका दिया है संजय जी ने गाने का, तो थोड़ा बहुत कोशिश जरूर करूँगी। अमिताभ जी के कश्मीरी गाना Sapna ji, एक सेकंड, वो संजय जी, I think he will get the mic in order. In the meanwhile, may I request Dr. Vinay Thusu to talk about the significance of Nal Ded to Kashmir and Kashmiri poetry and to Kashmiri culture. Thank you, sir. Lalveshwari, locally popular as Lal Ded, was a Kashmiri mystic of the early medieval period, renowned for her devotional lyrical verse. Laleshwari was born in a Kashmiri Pandit family during the reign of Alauddin Khilji.
Evidence strongly suggests that women in erstwhile Kashmir received liberal education. She was supposedly inspired by exposure to Shivaite teachings and preachings early on in her life, as substantiated by her poetry, which indicates that she was educated as a young child at her father's house. She left home at the age of 24 to take sannyasa, renunciation, and became a disciple of the Shivite Guru Siddha Sirkanta, also known as Sadboy, whom she ultimately surpassed in spiritual attainments. She carried forth the torch of Shivaism, erstwhile known as Trika, in Kashmir, and much proliferated it. She was instrumental to the body of vernacular mysticism in the region and a harmonizing influence and crucial link between traditional mysticism, the popular Bhakti movement, and Sufism. To erstwhile sensibility, Lal Dutt was a tantalizing oxymoron, a revolutionary reformer, and idealist empath. She is also known by various other names, including Mother Lala, Lal Arifa, Lal Didi, Laleshwari, Lal Yogeshwari, and Laleshwar. Thank you, sir. Now I request Dr. Sapna Kacharu to continue with her concert, if in case her setting has been rectified. Kacharu Sahab, Sanjay ji, Sapna ji, can we start, please? Thank you. thank you. गजल फरीदा खानम जी की। आज जाने की जिद ना करूं, आज जाने की जिद ना करूं, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें क्या ना करो, आज जाने की जिद ना करो, तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम
जाने जा। बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। इनको खो कर मेरी जाने जा। उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें क्या ना करो। आज जाने की जिद ना करो। Thank you very much, ma'am. Indeed, something which, created that environment of positivity which is required right now. I'm sure it is the need of the hour. I would like to just quote something from Laleshwari, the great saint. Oh dear one, why worry? What is meant for you will always find you. I mean, music and such positivities around us is the only thing which keeps us going. We also have with us Professor Ashok Emma, Vice Chancellor, Central University, Jammu. I welcome him on behalf of Stratford. And also Professor Manoj Dhar, Vice Chancellor, Jammu University. We welcome you all, sir. Thank you very much for joining us this evening. May I please request Dr. Shankar Adawal, renowned astrologer, to please speak a few words and share his thoughts with us right now, sir. Thank you. He also tells us a little about what the future holds for us. Yes, sir, please. I really don't know. It's great, the music. I mean, is something which is in the consciousness, and it has a great impact on all of us. So this endeavor of Sapnaji is an excellent endeavor, and people who understand music, who don't understand music, it's the voice, it's the aroma which does everything.
And as far as astrology is concerned, we can have a discussion in a different forum sometimes. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Sapna ji, over to you. I mean, we can't even wait that, I'm just interrupting you again and again with all that, but I'm sure the audience actually just want to listen to you. So please, something from you yet again. जी एक सेकेंड. Yes, ma'am. I mean, till the time she's just setting her instruments in order, I can share. Are we ready? Okay, fine. तबला मिला रही थी. Yes, ma'am. Thank you. राग बागेश्वरी, छोटा ख्याल, द्रुत ख्याल मतलब. थोड़ा इस राग के बारे में बता दूं. ये राग रात्रि का राग है, थाट काफी है और मियाँ तानसेन जी ने इस राग का इजाद किया था. महाराजा अकबर जी के कोर्ट में वो ये गाया करते थे. राग बागेश्वरी. ने सा गा 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 मर गा गा रे गा सा. अपनी गरज पकड़ ली भैया मोरी, अपनी गरज पकड़ ली भैया मोरी, भैया मरोड़ी जोरा जोरी, अपनी गरज पकड़ ली भैया मोरी. एक सेकेंड प्लीज, तबला सुनाई नहीं दे रहा. अपनी गरज पकड़ ली भैया मोरी, भैया मरोड़ी जोरा जोरी, अपनी गरज पकड़ ली भैया मोरी. जमुना पे कुंवर श्याम, जमुना पे कुंवर श्याम, जमुना पे कुंवर श्याम, दौड़त सुबह शाम, भाग आई दौड़ आई जोरा जोरी, अपनी गरज पकड़ ली भैया.
सारे दानी सारे दानी दानी दा सा नी रे दानी दानी दा सा नी ग रे ध ग रे ग ध रे ध नी धा प नी गरज पकड़ लीनी बैया मोरी सानी दानी सारे दानी दानी दा सा नी रे दानी दानी दा सा नी ग रे ध ध रे नी सा दानी दा सा ग म दानी सा म ग रे ध रे ध दानी दा म ग म ग रे ग सारे दानी दा प नी गरज पकड़ लीनी बैया थोड़ा सा तबला कम सुनाई दे रहा है, कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो पा रही है, प्लीज। ग रे ग सारे नी सा दानी दा सा नी रे सा नी दानी दा सा नी रे सा नी अपनी गरज पकड़ लीनी बैया मग मद मग मनी मग म सा रे सा नी दा दानी दा मग रे अपनी गरज पकड़ लीनी गम म गम म गम म गम ध म ग ध म ध म ग म ग रे ग अपनी गरज गम गम ग म ग म ध म ग म नी दा म ग म सा नी म ग म रे सा ग रे रे सा रे नी दा दा नी दा म द ग म ग रे ग सा रे नी दा दा रे नी दा दा नी सा ग सा ग म ग म द म दा नी सा नी दा सा नी दा नी सा ग सा ग म ग म द म दा नी सा नी दा रे दा नी दा नी दा म द ग म ग रे ग सा रे सा नी दा गम म म गम म म गम म गम म गम ध ग ध म म म गम द नी द नी द गम द नी द म द नी द ग रे द नी द सॉरी सानी दानी सागर दा दानी 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 दा म गा म दानी दा ग रे दा रे रे दानी दा दानी दा म दा गा म रे गा सा रे सा नी दा अपनी गरज पकड़ लीन गा म म गा म दा गा दा म गा म दानी दानी दा म गा म दानी दा ग रे दानी रे दानी दानी दा म दा म गा म दानी सा रे दा अपनी गरज पकड़ लीनी बैया Thank you, ma'am. Thank you for this wonderful rag. Well, I would also like to welcome, we have Principal of Miranda House, Dr. Vijay Lakshmi Nanda with us. Also, we have some of the fans from overseas, Professor Sanjay Kaul with us. Can I please request Professor Sanjay Kaul to speak few words? Professor Kaul? I think there's some network issue. Well, I would also like to welcome I would like to welcome Kala Joshi Datta, Miss Kala Joshi Datta. She's associated with libraries and she's well known and she's a music lover altogether. I think Professor Kaul, can we just have him here with us? Till the time we just fix in some of the glitches in the system. I would like to share with you a shairi right now. कहे कि दिल, ये कहे कि दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं. I'm sure this is the time that we all stand united, and I'm sure we can fight this pandemic in a very positive way. The only three things that are required right now is to wear a mask, wash your hands, and social distancing. These three basic things, minimum basic things we can do to at least save ourselves from this pandemic. Ma'am, Sapna ma'am, are you ready to sing more with us, or should I ask someone to speak and you need some rest or whatever you say? I'll किसी को जरूर कहने का मौका दें, तब तक तबला ट्यून कर रही हूँ. Fine, ma'am. I'll just. यही कहना, तबला बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ रहा है नैन्सी. That's what sir वो वही fix up कर रही हैं. I think. ठीक है, ठीक है. Why don't we ask Rajkumar Bhatia ji to speak a few words? Rajkumar ji is a very, very well-known figure in teaching, academic. He's led the Teachers Union in Delhi University. He was my colleague at the board of Kirori Mal College. He's associated with numerous social organizations. Rajkumar ji, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, कुछ सुनाइए, कुछ बोलिए.
थैंक यू अमिताभ जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुझे बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगा कि मैं सपना की डांट खाने से बच गया आज, क्योंकि पहले 2-3 मौके ऐसे आए थे कि मैं सपना सर आपकी आवाज, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रही है ठीक से, ब्रेक हो रहा है आवाज। There is some problem. In the meantime, can I please request Professor Bijay Lakshmi Nanda to speak a few words? Ma'am, can you hear me? I mean, can you unmute yourself? I mean, I'm trying from my end, but I think you'll have to do it from your end. Professor Bijay Lakshmi Nanda ji, can you please unmute yourself? I think there's some error, some technological problem. So can I please ask Madam Kala Datta to please share some inputs, some thoughts in regards to this pandemic with us? I mean, can you please unmute yourself, ma'am? Yeah. Hi, my name is Kala Datta, and my maiden name is Joshi, and I have been a senior librarian with the U.S. mission. I was the library director at the American Central Library, which serves the entire North India, and I am very happy to join today. I am a music lover, and I am learning music, and I'm nowhere like. I'm very happy that I got this chance to hear the classical music. And this pandemic, I am like anybody else, taking full care of my health, taking all precautions, and I'm hopeful that this will also pass. So let's be hopeful. And I do not like personally to talk about Corona. I don't like to all the time be, panicky about it. I really want to see the brighter side, that we have time with family, we are doing things ourselves, and we are actually knowing that human being doesn't need so much. All that we have accumulated over the years, nothing is of real use. And my personal view is that we should be grounded, we should know ourselves in this pandemic and help people around us. And I'm very hopeful that by a few months pass, and then we'll be having a normal life. So all the best to all of you, and thank you for giving me a chance to attend this concert. Thanks a lot. Nancy ji, I think Sudhanshu Pandey ji, who we rightfully claim to be part of J&K, but he's now, of course, the Secretary to the Government of India in one of the most important ministries of food and civil supplies. I've had the privilege of working closely with him when he was Divisional Commissioner of Jammu and I was Vice Chancellor. May I request on behalf of Stratford for him, first of all, for us to congratulate him and for request him to say a few words. Thank you very much, Amitabh ji. Nice seeing you, and nice listening to this wonderful music, which is a rare opportunity these days. Classical, one rarely gets to hear. First of all, I am very happy for the invitation for this event, and I'm very happy to join. And having served in Jammu and Kashmir, I am very, very closely associated with developments there and with the people there, their problems, their issues.
and I try to actually still take a lot of proactive steps wherever possible to address those issues. So I'm very happy to join, and this is, as the previous speaker said, it's a very, very challenging time, and not all generation actually get this kind of shock that our generation has got. But I'm sure it's a big lesson. Crisis often throws up a lot of opportunities also. So we have to be positive, we have to be patient, and we have to be very have a lot of perseverance, so that we can face this challenge as a humanity. We have to realize that we are a very small speck in the universe, and we have to be more responsible. And I think this is a reminder from nature to mankind that we have to behave very responsibly. I'm not going into genesis of corona, but yes, we have to be very responsible, and we have to correct ourselves in future and feel part of the nature rather than trying to master it. Thank you very much, Amitabh ji. Thank you very much, Sanjay ji, for this wonderful opportunity. I look forward to listening to some wonderful music. Thank you so much, sir. Thank you for these kind words. And I'm sure you're loving this, and I'm sure everyone is loving the music. We also have with us Shri Shiv Murari Sahai, Additional Secretary, National Security Council. Sir, can you please unmute yourself and share your thoughts with us? Well, thank you very much for the invitation to attend this music program. Sapna ji I've heard earlier also, and it was a very pleasant surprise that we have got in her an extremely talented singer, and I'm sure she is yet to find her place in amongst the galaxy of really good singers in this country. And this talent really needs to come out, and I'm very happy to know that she will be performing abroad, and perhaps that's the stage that is meant for her. But it's very kind of her, because it's a privilege to listen to her, that one has been able to hear her on this platform. And there's no doubt that we are going through a very difficult phase with regard to corona. And I think till the vaccine doesn't come out, we have to learn to live with it. But what better way of finding solace than to find it in music? And I would say one thing is that in this day and age where moorings are very important, where people must be anchored to their culture and to their legacy, your efforts and of getting the students to listen to classical music is an extremely important thing. And there's no better way of actually, classical music has got a very therapeutic effect, and I'm sure there is no better way than to find solace in during a time like this, when you're largely confined to your home and to yourself. I would once again like to thank you all and congratulate you for this effort. Thank you so much, sir. Thank you so much. Also, since I mentioned, we have with us Professor Ashok Emma. He's Vice Chancellor, Central University, Jammu. Sir, can we have you with us? I mean, can you just speak a few words? Thank you. I think I was on my way back from the office when I got the call that there's this musical session being organized. I told my driver to just hurry past, and I just joined you the time you had started. It's a wonderful, as was being talked by Saisa, the therapeutic, treatment to your emotions, to the stressful life we have had for the last so many days. And I think this is what I was looking forward after a long time. Coming back to what was spoken about Lal Ded, I think we have had a seminar recently in the Central Institute of Jammu. It's the time we start looking to the, what Sai Saab said, to the cultural moorings, which there's been a huge deficit for nearly 500 to 700 years, where the philosophical, mystical, spiritual ethos and contribution of Kashmir possibly could not find that kind of a projection and the space in Indian philosophical, cultural and
spiritual diaspora, which is being done now. Therefore, I compliment all of you for having created this evening, which is musical, but as well as lays focus on Lalishwari, which is very important to us. I still I remember one of her wakas, which is for all of you. Looking, these times, she says, Goras puchon kuni watsun, nepre dubnam andaratsun, suiga me wakt watsun, tavayotum nangayatsun. I asked my Guru, what's the mantra for salvation? And Guru said, nothing. Converge from outside into inside. And in knowing myself with the obsession and the passion, even if I was walking naked, I did not know the difference. So that's the kind of Atmachintan which she spoke about in 13th century beginning. So that's the kind of a rich legacy I think we need to rediscover in the Indian context to our civilizational richness. So having this kind of platform, I think it augurs well for us to consolidate on that. Thank you very much. Thank you so much, sir. Just to inform you all, we are live on our digital platform as well, and we have almost around 50,000 global audiences with us right now who are listening to Sapna Ji. I mean, over to you, Sapna Ji. Now, enough of it. Now we want to listen to something more smooth. समापन करूंगी भजन से मीरा. मैं तो गिरधर के रंग राती में, गिरधर के रंग राती, मैं तो गिरधर के रंग राती में, गिरधर के रंग राती. और सखी मद पी पी माती, और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिए रहूंगी माती, मैं रस पीऊं प्रभु प्रेम को, मैं रस पीऊं प्रभु प्रेम को, छकी रहूं दिन राती में, गिरधर के रंग राती, मैं तो गिरधर के रंग राती में, गिरधर के रंग राती. कोई को पी परदेस बसत है, लिख लिख भेजत पाती, कोई को पी परदेस बसत है, लिख लिख भेजत पाती. मेरो पिया मेरे घट में विराजे, मेरो पिया मेरे घट में विराजे, बात करूं दिन राती में, गिरधर के रंग राती, मैं तो गिरधर के रंग राती में,
गिरधर के रंग राती पीहरहूँ या सासरे में पीहरहूँ या सासरे में निस दिन में मदमाती निस दिन में मदमाती मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर चरण रहूं दिन राती में गिरधर के रंग राती मैं तो गिरधर के रंग राती में गिरधर के रंग राती और सखी मद पी पी माती और सखी मद पी पी माती मैं बिन पिए रहूंगी माती मैं रस पीऊं प्रभु प्रेम को मैं रस पीऊं प्रभु प्रेम को जगी रहूं दिन राती में गिरधर के रंग राती मैं गिरधर के रंग राती मैं गिरधर के रंग राती साउंड नहीं है Nancy ji, you are on mute. Sapna ji, may I request you on, I'm getting lots of WhatsApp messages that apart from your khayal in Rag Bageshwari, there's a fan following which likes popular Hindi music as well. If you could sing a couple of songs to conclude the evening on a lighter note, perhaps. एक मराठी सिंगर हैं आरती अंकलेकर तिकेकर उनकी गाई एक दो लाइनों का से समाप्त करती हूँ सैयामों से बो बत्तियाँ सैयामों से बोल बत्तियाँ सैयामों से बोल बत्तियाँ तड़पाता हूँ सारी रतियाँ सैयामों से बोल बत्तियाँ सैया। सपना जी, शायद मेरी आपने आवाज आप तक पहुंच रही है? सपना जी पहुंच रही है। काफी लोगों की विनती ये है कि आप कुछ, आपने शास्त्रीय संगीत तो सुनाया, लेकिन अगर आप हम उनकी गुजारिश माने तो कुछ फिल्मी संगीत में, अगर आपने, मुझे पता है कि आपकी रुचि है, लेकिन ये शाम वैसे शास्त्रीय संगीत के लिए रखी गई थी, लेकिन अगर आप उनकी ये रिक्वेस्ट माने तो बहुत अच्छा रहेगा।
उससे ही हम कंक्लूड करेंगे इवनिंग. अखियां मिला के चलना, लाए ना जुदाई वे, अखियां मिला के चलना, लाए ना जुदाई वे, दे देवे मैं जाने मैनू सारी खुदाई वे, अखियां मिला के. Thank you, ma'am. Can we have with us Mr. Alup Joshi? Sir, can you please unmute yourself? Can you please speak few words? I can only say that it's been a mesmerizing evening. What a wonderful voice, and thank you for being, for making this event possible. I can imagine under what challenging circumstances Sapna ji has, rendered these songs and the classical music as well as the light music. But it's been wonderful evening. It's been challenging times, but as has been said by Mr. Pandey, one should look for opportunities in these challenges. And I think one of the things I would like to share with my young colleagues and compatriots is that technology is something which they will have to, look for answers in technology to surmount the difficulties that they are going to face in the coming times. And technology will provide the solutions for their problems. And once again, I would like to congratulate the organizers for this lovely evening. Sapna ji, thank you so much for. It was a wonderful, mesmerizing performance. Thank you. Thank you, sir. No, Nancy ji, I'm taking over your role for a second because I know in Kashmiri there is a saying that no ritual is complete unless the mama of the bride or the person who's the protagonist is there. So I az mam Professor Bibi Dhar Yeti Bihit to Darsab to Ikariuke. Please, Professor Bibi Dhar is the maternal uncle of Sapna ji. So I'm requesting him to say a few words. Thank you. I must first of all congratulate Steadfast India to organize such an evening. Thanks, Sanjay, along with your admirers, along with your well-wishers. It was a good idea. I didn't believe it when I got the first information that you're going to have it once. But these days, these things have become very common. Sapna, I've been knowing from day one. I mean, I can just say one thing. When I requested her first time to sing opening song in a 5-star hotel for a international conference, I didn't find out where she had gone. Just after that singing, she just had left. She was so shy those days. But today, she is having an international platform, and we are very proud of you, Sapna. You have been doing very well ever since then. And I must say this period of our life, which I think earlier speakers have said, must have never faced, and we are facing it. And I don't know how long we have to keep on facing it. And such an evening, most welcome. Such eminent speakers like Professor Mattu, Professor Chauhan, and whom I know very well, and Professor Tyagi, I have met only once. I think there's a Dr. Ogra also here. I heard him earlier somewhere joining. If he should be around, he is another person, important person who very well writes after in the Facebook how an event went, which if he is around, perhaps he'll do that.
Thank you very much for inviting me. Thanks, Sapna, and thanks, Sanjay, and thanks everybody else. Thank you, sir. Thank you. Also, we have with us Professor Vijayalakshmi Nanda, and I just requested her to unmute herself. Ma'am, can you also please share your thoughts with us about the evening? I mean, anything which you would like to share with us. It is indeed an honor and pleasure for me to be here. Thank you so much, Stratfirst, for calling us here. It is also a moment of great joy for me to connect with our chairperson, Professor Mattu. We count on his energy and his support to run the college. I think in a way it was very healing for me personally, because as the acting principal, there are times when I feel that there is nothing that I can really do right by the student. So it is a challenging time, and the beautiful songs transported me to Jammu, to Kashmir, learning about Lal Ded, and the beautiful rendition both of Farida Khanam as well as the Mirabai Bhajan has given me a lot of healing personally. So I would like to thank you, and I'm going to carry this voice back to my students. There is a Facebook page where students are being connected, and you have shown us the way. Thank you, Nancy. Thank you, Professor Mattu. Thank you, Professor Chauhan, for being here. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Can we also have Professor Manoj Dhar, Vice Chancellor, Jammu University, to please unmute himself and speak a few words? Yeah, good evening, everybody. It was a great evening. And first of all, let me congratulate Sapna ji for the wonderful and beautifully sung songs here on this platform. And as I would agree with Professor Mattu, Professor Chauhan, and Sudhanshu ji, that this is a very challenging time, and we have to look for positivity in this stressful environment. So I think this was a great evening, which gave us an opportunity to relax. And as many things have been done in this challenging time of COVID-19, and everybody is actually trying to see how we can come out of it. But I think this was a wonderful opportunity to hear Sapna ji and see that how we can actually spread positivity in our environment. And especially I felt really moved that this was an effort to connect to the students, and to also to provide them this opportunity and also assurance that definitely we are going to come out of it, and COVID-19 is going to be history, and we definitely would be successful. Hum honge kamyab aur zarur honge. Thank you so much for inviting me here. It was a wonderful evening. Thank you. Thank you, sir. We also have with us Professor Savita Roy, Daulat Ram College, Principal, Daulat Ram College. Can you please unmute yourself, ma'am, and speak a few words? Hello, everybody. It was a very nice and rewinding evening. And thank you, Sapna, for giving this musical evening to all of us. And I must say, COVID is going to stay, but we have to save ourselves, follow the precautions, and the life should return as normal as it should have been earlier. And your music, obviously your voice, we hear in the college every time. And congratulations also to you and Sanjay ji for organizing this concert and inviting me in this. Congratulations once again, Sapna. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. So I think we are now concluding our program. जाते जाते एक और शायरी शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ. हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तभी होती है जब ठान लिया जाता है. तो आई थिंक हम सब लोगों ने अब ठान लिया है, हिंदुस्तान में सब ने ठान लिया है कि इस कोरोना को हराएंगे, भगाएंगे. तो सबसे विनती है कि इस समय हम सबको एकजुट होकर रहना है.
एक दूसरे के साथ वो 3 चीजें जरूर याद रखिएगा, मास्क, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग. इतना बेसिक हम करें और आई एम श्योर वी ऑल कैन फाइट इट आउट. Now, may I please request our mentor, Stratfast India, Mr. Parikshit Kaul, to give a vote of thanks. Thank you. Sir, can you please unmute yourself? Thank you, Nancy. First of all, it's my privilege to have been asked to propose the votes of thanks on this occasion. I, on behalf of Stratfast India, extend a very hearty vote of thanks to the participants who blessed us with their presence and took out valuable time of their busy schedule. I must mention our deep sense of appreciation for Ms. Sapna. And as far as Sapna ji is concerned, I've been listening to Sapna ji's music since since last so many years. And every day there's a new feel, new kind of, as Shimurari Sai Sahab said, it's a therapeutic, it gives us some kind of solace, it's very good. And second, I also sing at times. थोड़ा बहुत फिल्मी गाने गाता हूँ, I'm not a singer, but I just keep rhyming. तो जब भी कभी सपना जी के सामने मैं गाता हूँ तो मुझे हमेशा डर लगता है. उनको देखता हूँ क्योंकि जब भी गाता हूँ तो परीक्षित जी आपने ये राग में इसको इस राग में करना है, ये राग is very particular and very nice, all of you. I thank Mr. Veer Chauhan ji who took the time out of his busy schedule and spoke about the vaccine, about COVID and all. Sanjay Kachru ji, who has been instrumental in many multi-dimensional things and all. He's always a creative person who keeps on thinking of different aspects. Although I think this idea came very late to him, because the idea was if he could have done this kind of a series since the lockdown start, all must have you ended. And I also thank all the participants. There are many people who are known, many people who are not known, jinka keval naam suna hua hai. And I thank all of you for taking out time in this evening, and I'm sure you all must have enjoyed. My mentor Shankarji is also there, so I also thank him. He's a very busy person. Alok Joshi ji, Shimurari Saha ji, I think Rohit Saha is also there. Vinay Srivastava ji is here. So there are many people. I'm sure Nancy ji, Amitabh ji, किसी ने नाम नहीं लिया होगा. So I think I request all of you जिनका नाम नहीं लिया, they should not feel bad. It is something watching this program from outside, from US. I'm getting WhatsApp messages. I requested some to speak, but they said they're just watching on Facebook, so they can't speak because they are not logged in Zoom. So this is a program. I think Stratfast has done something, very creative, and in future we'll be looking forward for more such programs. And with the guidance, mentorship, leadership of Amitabh Mattu ji, Sanjay Kachru ji is there, and then with Chauhan ji ka guidance mile, and there are many people who could keep us guiding. We have a Stratfast website, we have Stratfast Facebook, and we'll be in touch with everybody one-on-one to take suggestions and how to keep people busy, and in this specific this time, COVID times, how to all be together and move forward. And finally, I would also like to say big thanks to Nancy Jain, who was the anchor and moderator of this program. I'm sorry, there was this Meenakshi Kilamji also. There are many people. I'm sure it will not be possible to name everybody, and so please just forgive us for that. But I hope you all have enjoyed. So big thank to everybody for sparing your time. Looking forward to see you again in June. Thank you. May I ask Nancy ji to unmute everyone so that we can collectively say, "Hum honge kamyab, we shall overcome," and you can begin. Everyone need to unmute themselves. I am doing it from my end. Request everyone to unmute themselves, please. Professor Pramod is also there from JNU. Why are we going to end? They were thanking you by name and all that. That's your. Almost everyone is unmuted.
Yes, sir. Everyone is understanding. Parikshit ji, please start. Parikshit ji, can you take the lead and just start it so that everyone Yes, can. Sapna ji can sing better, na? Sapna ji has. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome someday. Shall overcome someday. Thank you everyone for being such a lovely audience. Thank you. Thank you. Good night. Thank you very much. Thank you. Thanks to Kunal. Thanks to Kunal. Thank you. Romana, Hemant, Thank you to everyone. Facebook. Thank you. Thank you. Thank you. हेलो पल्लवी जी, बताइए। Nancy ji, I have to end this because we were live on Zoom.